Good morning. Today we are going to solve first chapter, solution of history. Question first. Multiple choice type question. First, the medieval period in India covers the period from अर्थात मध्यकालीन अवधि की शुरुआत भारत में कब हुई थी? आंसर होगा बी 700 AD टू 1750. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. बाय होम वेयर द दिल्ली सल्तनत ओवरथ्रोन, अर्थात दिल्ली सल्तनत की गद्दी को किसने हटाया? आंसर होगा सी मुगल्स. क्वेश्चन थर्ड. नेम द बुक विच गिव अस डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. कश्मीर के इतिहास की पुस्तक किस पुस्तक में लिखी गई है? आंसर होगा राज तरंगिणी. आंसर नंबर डी, दैट इज रिटन बाय कल्हन. फोर्थ क्वेश्चन. इंडिया इज ऑफन रिफर्ड टू एज भारत इन विच लिटरेचर. आंसर होगा इंडिया इज ऑफन रिफर्ड टू एज भारत इन संस्कृत, अर्थात इसका आंसर डी होगा. मैंने भारतवर्ष का नाम भारत जो है यह सबसे पहले संस्कृत लिटरेचर में लिखा गया. नाउ fill in the blanks. Question B. Listen carefully. According to the question, unscramble the letter in the help box and fill in the blanks. अर्थात ये जो हेल्प बॉक्स है, हेल्प बॉक्स, इसमें जितने भी लेटर हैं ये अरेंज नहीं है. इनको अरेंज करके फिर इसमें भरना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन. With the arrival of Muslim rulers, new language dash and dash developed in India. इसका आंसर सेकेंड होगा इसका, जिसमें फर्स्ट में भरेंगे अरेबिक एंड सेकेंड में पर्शियन. फर्स्ट में भरेंगे अरेबिक और सेकेंड में पर्शियन. क्वेश्चन सेकेंड. द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक. आंसर नंबर थर्ड. हेल्प बॉक्स का आंसर नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड. चंद्रवरदाई वाज द ऑथर ऑफ. चंद्रवरदाई जो लेखक हैं वे किस पुस्तक के लेखक हैं? तो चंद्रवरदाई जो लेखक हैं इसका आंसर होगा हेल्प बॉक्स में फर्स्ट पृथ्वीराज रासो. फर्स्ट आंसर पृथ्वीराज रासो. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. द मिडिल एज इन यूरोप वाज मार्क्ड बाय, अर्थात जो मध्यकालीन का युग है यूरोप में, यह इसे कब माना गया था? इसका आंसर होगा लास्ट. जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 3 बता चुके हैं. पहला में आंसर सेकेंड होगा, दूसरा में आंसर थर्ड होगा, तीसरा में आंसर फर्स्ट होगा और चौथा का आंसर एक ही बच जाता है. इसका आंसर डी होगा. डी अर्थात है ना फेडरलिज्म. नाउ स्टेट ट्रू फॉल्स. द भक्ति मूवमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन. द भक्ति मूवमेंट सपोर्टेड द केस हायरिची. द स्टेटमेंट इज false. Now second question. First false. Second, the medieval Indian history is divided into 3 phases. False. Not. It is divided into 2 phases. Third question. India got its name Hindustan because of people living around the Indus River. Third question. इसका आंसर सही होगा. Now we are going to solve all the question of very short and short type.
Question first, very short answer question. Which period in Indian history is termed as the medieval period? इसका आंसर होगा द पीरियड बिटवीन 700 to 1050 is termed as the medieval period. Question second, name the two categories of historical sources. आंसर है the two categories of historical sources are पहला literary sources, दूसरा archaeological sources. Question number third, what are बायोलिस? बायोलिस आंसर होगा बायोलिस वेयर यूज टू स्टोर वाटर. दे आर मेनली फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान. दे आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वाटर कंजर्वेशन. नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज epigraphy? The study of inscription is called epigraphy. Now, question number 5th. Where were writing done in ancient period? In the ancient period, writing were done on palm leaves, tree barks, stone tablets, sheep leather, etc. Now come to short answer question. Explain quote chronicles. Answer. Quote chronicles are written by scholars about the kingdoms in which they lived. For example, Raj Tarangani written by Kalhan. This book gives us detailed account of history of Kashmir. Now come to second question. Which of the advent of Muslim, which new types of food were introduced? Answer. With the advent of Muslim, the new type of food item were introduced like biryani, pulao, korma and firni. Now question number third. Which pot were the major pot center of internal and foreign trade? Solution. Pots like Surat, Masulipatanam, Cochin, Camway were the major center of internal and foreign trade. Question number 4. Write names of any 5 dynasties that ruled during the medieval period. The Palaj, Pratihar, Rashtrakoot, Chola and the Rajput were the 5 dynasties that ruled during medieval period. Question number 5th. Who were court chronicles? Give examples of their writing. Court historians were appointed by the king to write down the history of the kingdom and the achievement of the kings. For example, Abul Fazl wrote Akbarnama and Ain-e-Akbari. Now come to long answer question. Question first. Write a short note on the new style of clothing introduced in medieval India. Kurta, चूड़ीदार पैजामा, दुपट्टा, shari, etc. were introduced in India during the medieval India. This adapted to the diversity of our dresses and customs. Now come to question. Second,
How did geography influence India? How did geography influence Indian history? Give two examples. Solution. Geography influenced Indian history in the following ways. First, ports led to internal and foreign trade. These ports enabled India to trade with the outside world, bringing now goods and ideas. Second, mountains led to the creation of strong forts, especially in Rajasthan. These forts helped in the military defense and helped the rulers to defend their kingdom against external attack. Now come to third question. What were the special features of foreign account? Give two examples. First, foreign accounts were written by foreign travelers. Whatever they saw, they recorded honestly. Second point, Ziauddin Baruni wrote an account of Delhi Sultanate in his book Tarikh-e-Firoz Shahi and Ibn Battuta's Rihala.